Good evening everyone and welcome to EduTap and to another important CT360 series session in which we cover the important current affairs from exam point of view. And today my dear friends, we will be covering the important current affairs from 21st to 23rd of June 2025. I hope that all of you are really preparing well for upcoming examinations, and today we are going to cover another set of important current affairs that is really going to help us to be ready for our upcoming examinations. And we all know that PFRDA exam is basically out, right? And also the SBI PO form is already out. So it is very important for us to make sure कि अब हमारी जो करंट अफेयर्स प्रिपरेशन है वो अच्छी रहे दोस्तों, क्योंकि एग्जाम का दौर शुरू हो चुका है और आपकी तैयारी उसके लिए एकदम पक्की होनी चाहिए। और इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आप हमारे इन करंट अफेयर सेशंस की हेल्प से अपनी करंट अफेयर्स प्रिपरेशन को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इफ आई एम ऑडिबल एंड visible to all of you, please give me a thumbs up in the chat box so that we can start with the today's session. If I talk about these sessions, guys, let me tell you that here we cover the most important G and ESI current affairs, and the major prominent sources that we use in order to extract the news articles is PIB, The Hindu, Live Mint, Economic Times, Business Standard। तो यहाँ पर इन न्यूज़पेपर्स की जो की और मेजर न्यूज आर्टिकल्स हैं वो हम यहाँ पर कवर करते हैं एज पर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम ट्रेंड्स। ओके, और ये सेशन हम 3 स्टेजेस के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं पुराने सेशन के एस्पेक्ट्स को, क्योंकि सिर्फ बिना रिवीजन किए आगे बढ़ जाना इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू द करंट अफेयर्स रिवीजन इज द की। नाउ द सेकंड स्टेज इज डिस्कसिंग द करंट अफेयर्स दैट are basically of these particular dates, and after that we move on to solving the MCQs. Okay, I hope that this part is clear to everybody और आप सभी आज अच्छे से प्रिपेयर करके आए हैं अपने पिछले सेशन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो देखते हैं, बट बिफोर दैट लेट्स ट्राई टू सी द इंपॉर्टेंट news articles that we will be covering in the today's session. You can see here Navya, OSR by Gram Panchayat. So my dear friends, here basically the first 3 news articles are there. अगर there are some people who are preparing for regulatory bodies exams, तो उनके लिए ये न्यूज आर्टिकल आपका फेज 1 और फेज 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर सिलेबस टॉपिक्स। ठीक है, और अगर and the remaining articles are only relevant for phase 1 of the examination for the regulatory bodies like Reserve Bank of India, RBI grade B officer, NABARD grade officer. And when it comes to your banking examinations, then let me tell you that all these articles can be asked in the examination, be it your PFRDA or basically your SBI IBPS। तो बाकी के सभी आर्टिकल्स आपके फेज 2 के अंदर पूछे जाएंगे। I hope that this is clear to all the people, right? So PFRD का we all know दैट फेज 1 के अंदर आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, तो वहां पर इन न्यूज आर्टिकल से क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछा जा सकता है। ओके, सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, वी विल बी मूविंग ऑन टू द रिवीजन एंड वी विल सी वेदर यू हैव रिवाइज्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द प्रीवियस सेशन कंप्लीटली और नॉट। सो लेट्स स्टार्ट इट। Here is the very first question on the performance grading index. तो performance grading index सबसे पहले आपको बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करती है। The second question is जो highest achievable grade है in the performance grading index वो क्या है। Third part is that which state or UT was on the top in this report while achieving the grade Prachesta 1. तो जल्दी जल्दी बताइए what is the right answer here to this particular question। अगर हम बात करें performance grading index की, it was launched by Ministry of Education. That is the right answer. Moving to the next question, the highest achievable grade is basically Daksh. And the name of the state in UT which was on the top according to the performance grading index, what is the name of that state or UT? It is Chandigarh. So Chandigarh is the right answer. So ये हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस कर लिया है। आई होप दिस इज क्लियर। और हमने ये भी पार्ट किया था दोस्तों कि जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स अभी रिलीज किया गया है उसके अकॉर्डिंग 24 स्टेट्स एंड यूटीज हैं जिनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है और बाकी 12 की डिक्लाइन हुई है, right? Moving to the next question, that is on energy transition index. The first question for all of you is that which organization has released it? What is it? What is the right answer? It is World Economic Forum. That is the right answer. And it is topped by which country? So which country was on the top in the energy transition index? It was Sweden, which was on the top. And when it comes to India, India's position dropped by 8 places from 63 to 71 in the energy transition index released recently by World Economic Forum. World Economic Forum is headquartered in which place? It is in Geneva, Switzerland. Okay, everything is absolutely right, guys.
I can see in the chat box everybody is giving me the right answer to all these questions. Well done. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लॉन्च डैश नॉलेज हब. तो कौन सा नॉलेज हब यहाँ पर लॉन्च किया गया, विच विल बी एक्टिंग एज अ डिजिटल रिपोजिटरी फॉर ऑल द प्रोसेसेस दैट आर द पार्ट ऑफ जेंडर बजटिंग. सो व्हाट इज द राइट आंसर? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज जेंडर बजटिंग नॉलेज हब. नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड सिंपोजियम वाज हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस. कहां पर हुआ था ये? इट वाज हेल्ड इन आईआईटी मद्रास. Next question. The first Indian American to be appointed as provost of the MIT USA. What is the right answer here? What is the name of that person who has been appointed as the provost? So that is Anant Chandra Kashan. That is the right answer. Okay, absolutely right. Moving to the next question. Indian player dash defeated world number 1 Hu Yifan of China. What is the name of this person? That is Navya Deshmukh. Next question is Indian government launched a dash to evacuate Indian nationals from Iran and later expanded to evacuate Indian nationals from Israel. तो इजराइल और ईरान से जो इंडियंस हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए कौन सा नया ऑपरेशन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था? दैट वाज ऑपरेशन सिंधु. सिंधु इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Who has been conferred the prestigious Digital Payment Award 2024-2025? So digital payments को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए what is the name of that organization which was conferred this award? That is India Post Payment Bank. India Post Payment Bank is the right answer. Next question. Dash is assumed charge as the chairperson of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. तो PFRD aspirants याद रखिए इस क्वेश्चन को. It can be asked in the exam. Okay. Because PFRDA new chairperson has been recently appointed and he is replacing Deepak Mohanty. What is the name of this person? Yes, S. Raman is the right answer. Next question. United Nations proclaimed dash as the International Day of Yoga. तो International Day of Yoga हम कौन सी डेट को सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों? We celebrate it every year on 21st of June. 21st June is the right answer, and this year the theme of the day was Yoga for One Earth, One Health. Now guys, can anybody tell me that which is the city in our country which is hosting the International Day of Yoga celebrations this year? So where exactly this celebration is took place? And let me tell you that Prime Minister Modi ji led a program where more than 3 lakh people have participated and they have practiced yoga at that particular location and created a world record. What is the name of that place? That is Visakhapatnam. Absolutely right, that is Visakhapatnam. Okay, so with this we have revised each and every important aspect of the previous session. तो जिसने पिछला सेशन भी यहाँ पर मिस किया था दोस्तों, एक ब्रीफ मैनर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को यहाँ डिस्कस कर लिया है. एंड आई बिलीव कि यहाँ पर जिन्होंने पिछला सेशन अटेंड नहीं किया था उनका यहाँ एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन पर सभी चीजें कवर हो गई. बट स्टिल आई विल रिकमेंड यू कि आप पिछला सेशन जरूर देखिएगा आफ्टर द एंड ऑफ दिस सेशन एंड इंश्योर दैट ऑल द इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपने अच्छे से कवर कर लिए हैं. ओके, और रही बात जिन स्टूडेंट्स ने पिछला सेशन देखा था, क्या उन्होंने एनालाइज किया यहाँ पर, उनको कितनी चीजें याद है और कितनी नहीं है? प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एनालाइज एंड दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग दीज रिवीजन टेस्ट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन सो दैट आपकी रिवीजन हो सके और आप खुद को एनालाइज कर सके अक्रॉस ऑल दोज इंपॉर्टेंट डायमेंशंस that you have basically covered in the previous session. Okay, so I can see in the chat box all the people have given me the right answers. Yes, and now let's move on to the news articles of the today's session, and the first article today is Navya. So guys, Navya basically is a program which has been recently launched by the government of India from Sonbhadra, Uttar Pradesh, and this is in line with the Viksit Bharat at the rate 2047. So guys, what exactly we are going to do here is, you can see here that this program is a Navya for skilling adolescent girls under the Viksit Bharat at the rate 2047. My dear friends, you all know that India is having an aim of becoming the developed India by year 2047. And in order to pursue this dream of becoming a developed India, and to ensure this, we just want that every woman of our country is also acting as a catalyst in India's journey of development and becoming developed nation by Viksit by year 2047. And that's why
Navya program has been recently launched by the government of India. So Navya की क्या फुल फॉर्म है, किस मिनिस्ट्री के अंदर लॉन्च किया गया है, क्या टारगेट है इसका, किसको ये फोकस करेगा? So we will be covering all the aspects of the Navya here in this particular session. So guys, when it comes to Navya, Navya stands for nurturing aspirations through vocational training for young adolescent girls. That is Navya. ठीक है, एंड फॉर नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग, वी स्टैंड्स फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स. ठीक है, सो बेसिकली एडोलेसेंट गर्ल्स आर देयर, सो वी विल बी फोकसिंग ऑन द गर्ल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एज. वो क्या एज ग्रुप है, दैट विल ऑल्सो डिस्कस इन द अपकमिंग स्लाइड्स. तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर लॉन्च किया गया है? इट इज बेसिकली डन अंडर विच मिनिस्ट्री गाइस? थोड़ा सा कॉमन सेंस यहां पर लगाते हैं. लेट्स ट्राई टू यूज सम कॉमन सेंस. वी आर टॉकिंग अबाउट द वुमेन. We are talking about the skills. We will be providing them the skills so that these women will be acting as the catalyst in India's journey of becoming the developed India. So women's के लिए कौन सी ministry है my dear friends? Ministry of Women and Child Development. And for the skill, which ministry we are having? We have a Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. So these two ministries have together launched Navya skilling program. ठीक है? Now what is the objective? We will empower the adolescent girls. How we will be empowering them? We will be empowering them by providing them vocational skills with the help of which they can take up the non-traditional jobs. ठीक है, तो यहाँ पर non-traditional job roles उनको provide करने के लिए, and so that they can also live their life with full of confidence, opportunities and the freedom. So we are basically providing these vocational opportunities and the vocational training to these girls of our country. And under this part, so we will be focusing on the girls of 27 districts across 19 states. तो अभी 19 states को choose किया गया है, तो इसके 27 districts के अंदर जो women हैं of this particular age, we will be focusing on them, right? And this includes aspirational and the northeastern districts also. It has been launched from Sonbhadra, Uttar Pradesh. I hope till now everything is clear to all of you, right? Now moving ahead, when it comes to the age criteria, the girls who will be able to attain the benefit under the Navya program, that is of the age of 16 to 18 years. So adolescent girls of age 16 to 18 years will be targeted and they will be provided vocational training under the Navya program. Okay, so with the help of this, we will be able to provide the non-traditional vocational job roles. Okay, and again here the two ministries are going to work together, that is Ministry of Women and Child Development and the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. तो दोनों ही ministries मिलकर काम करेंगी and they will be providing this vocational training to these women of 16 to 18 years of age. ठीक है, I hope everybody is clear with this part. And here we will also get support from प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. guys, कौशल बोले तो स्किल, तो इसके लिए हमारे पास एक स्कीम है, एंड दिस स्कीम विल आल्सो बी प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू दीज वुमेन अंडर द नव्या प्रोग्राम. ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस न्यूज आर्टिकल. आई बिलीव एवरीबडी इज क्लियर. सो नव्या के फुल फॉर्म याद रखिएगा, नाम में ही क्लियर है. YA is basically young adolescent girls, right? V stands for vocational and N stands for nurturing aspirations. तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि how exactly we are going to ensure that every woman is going to act as a catalyst in India's journey of becoming developed nation by year 2047. Okay, I hope this is clear. Moving to the next news article, that is generation of own source revenue by Gram Panchayats. So guys, under this part, you can see here that Ministry of Panchayati Raj, it has launched a training of the trainers program. So ये training of trainer program को launch किया गया along with IIM Ahmedabad, right? And under this part, basically we are having a training of trainer program, जो कि एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा for converting theoretical knowledge into the practical strategies. अब ये कौन सी strategies provide की जाएंगी? As you can see the headline, that is own source revenue. That means हम अपना revenue खुद से ही generate कर रहे हैं, right? Own source revenue is basically when that particular body is generating its own revenue without depending upon any grant from the higher body. I hope this is clear. So हमारी ग्राम पंचायत अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करेंगी through the local taxes, through the fees, through the charges, and it won't be dependent upon the higher bodies, about the higher government bodies.
that they will be providing them grant and then they will be able to run themselves. No, they will be generating their own source revenue. और ये कैसे हो पाएगा? इनको यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, इसके लिए मॉड्यूल्स बनाए जाएंगे, और मॉड्यूल्स कौन बनाएगा दोस्तों? सो दैट इज इंडियाज प्रीमियर एमबीए इंस्टीट्यूट, दैट इज IIM Ahmedabad. So IIM Ahmedabad will be creating these modules, and that is why this particular ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर्स प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज अलॉन्ग विद IIM अहमदाबाद. और कहां पर इसको लॉन्च किया गया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन न्यू दिल्ली. So you can see here we will be do capacity building of these gram panchayats to generate and manage their own source revenue. अपना source revenue वो खुद यहाँ पर generate कर सकते हैं, right? We will institutionalize revenue planning and promote financial autonomy. Financial autonomy यहाँ पर वो they are not dependent on anybody else. They are self-dependent. And then a territorial coverage. So we will be including 16 states and union territories. And right now एक प्लान और पायलट फेज में इसको लॉन्च किया जाएगा. उसके बाद we will be again rolling out across India also. Okay, so this is something that we are going to do under this training of the trainer program launched by Ministry of Panchayati Raj. I hope this is clear guys. So एक प्रोग्राम इनिशिएटिव जो है इसको लॉन्च किया गया था. It was organized by the ministry under राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान in collaboration with IIM Ahmedabad. So the most important part is to understand about the trainer of the trainers that has been launched, so that these gram panchayats are basically the own source revenue. I hope this is clear and everybody is clear with this part that what exactly is going to happen under this particular program. Okay, बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ दोस्तों. दैट इज त्रिपुरा हैज अचीव्ड फुल फंक्शनल लिटरेसी. तो त्रिपुरा को डिक्लेयर किया गया एज द फुल्ली लिटरेट स्टेट, एंड लेट मी टेल यू दैट विद दिस त्रिपुरा हैज बिकम द थर्ड सच स्टेट टू बी डिक्लेयर्ड एज fully literate state in our country. Which are the other two? These are the Mizoram and Goa. And only this year we have seen that first Mizoram became the first state and then Goa became the second state. And now Tripura has become the third such state to attain full literacy in our country. और full literacy को attain करने के लिए there is a particular benchmark that this state is required to cross. अगर हम बात करते हैं वो benchmark की, so that is basically 95% literacy among individuals aged 15 years and above. तो 15 या 15 साल से ऊपर के जो लोग हैं, ऐसी जो टोटल पॉपुलेशन है स्टेट की, उसमें 95% पॉपुलेशन यहां पर लिटरेट होनी चाहिए, और तभी उस स्टेट को कहा जा सकता है दैट इट इज फुल्ली लिटरेट स्टेट. एंड व्हेन इट कम्स टू त्रिपुरा इट हैज अचीव्ड 95.6% ऑफ द लिटरेसी रेट, एंड दैट इज व्हाई इट हैज बिकम थर्ड सच स्टेट टू बिकम द फुल्ली लिटरेट स्टेट ऑफ आवर नेशन. तो याद रखिएगा इस 3 स्टेट्स हैं यहाँ पर. पहला है मिजोरम, सेकंड इज गोवा, थर्ड वन इज त्रिपुरा. MGT. I hope that this is clear to everybody. And now here under this news article there is a scheme also that we need to cover, and for that my dear friends, that is Ullas scheme, that is Nav Bharat Saksharta Karyakram New India Literacy Program. तो इसके अंडर ही त्रिपुरा ने अचीव किया है फुल लिटरेट स्टेट का ये पर्टिकुलर अचीवमेंट. आई होप दिस इज क्लियर. सो यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि हमें इस स्कीम को बहुत अच्छे से कवर करना है, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. और ये आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं इस सेशन को, बिकॉज आई जस्ट वांट ऑल ऑफ यू कि आप इसको अच्छे से कवर करें. सो आई हैव अटैच्ड अ यूट्यूब लिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट. तो जब आप आज की पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, so just click on this link and it will take you to this particular session. I hope this is clear. तो उसके बाद भी मैं आपको रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि 29 to 31 ऑफ मई का ये हमारा सिटी 360 सीरीज सेशन था, जहां पर हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है. ठीक है जी, बढ़ते हैं अब अपने अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ, दैट इज नेशनल रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री. तो दोस्तों आप सभी ने सुना होगा कि देयर आर सम पीपल हु आर हैविंग द रेयर ब्लड टाइप्स, राइट. तो ऐसे लोगों के लिए लाइक इन केस ऑफ emergency situation sometimes we need blood, right, during these emergency times. तो उस टाइम पर ब्लड इजीली अवेलेबल हो, इसीलिए एक रजिस्ट्री यहां पर बनाई गई है, दैट इज नेशनल रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री. तो ये इंडिया की पहली नेशनल रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री है जिसको लॉन्च किया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोहेमेटोलॉजी ने, जो कि मुंबई के अंदर है. तो ICMR NIH जो मुंबई के अंदर है, वहां पर इस रजिस्ट्री को सेटअप किया गया है और इसको फर्दर लिंक किया गया है ई रक्त कोष के साथ. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फॉर एवरी प्रोक्योरमेंट इन द पब्लिक सर्विसेज गाइज वी आर हैविंग द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, राइट. सिमिलरली अगर हमें ब्लड की जरूरत है तो वी आर हैविंग ई रक्त कोष.
तो ई रक्त कोष जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन, जहां पर हमें रियल टाइम मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट होती है ब्लड बैंक की, राइट। सो बेसिकली इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टल, दैट इज ई रक्त कोष। Okay, so we will be providing and supporting patients with the rare blood types, especially those suffering from thalassemia, sickle cell disease and other transfusion dependent conditions. तो यहाँ पर कोई disorder होता है या फिर sickle cell disease है या thalassemia है, तो ऐसे patients को support किया जाएगा who are basically suffering from these parts and they are also having the rare blood type. So ऐसे patients को हम इस registry के through support कर सकते हैं। Okay, that's why this initiative has been taken. अपार्ट फ्रॉम दैट आईसीएमआर ने इंडिया का पहला डायबिटीज बायोबैंक भी लॉन्च किया था चेन्नई के अंदर अलॉन्ग विद MDRF, दैट इज मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन इन 2024। तो यहां पर एक और अचीवमेंट इसने हासिल की है बाय सेटिंग अप दिस रेयर ब्लड रजिस्ट्री इन आवर कंट्री। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस न्यूज आर्टिकल। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल पर, दैट इज इंडियाज फर्स्ट 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस। तो दोस्तों इंडिया का पहला 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस। So in order to understand this news article, सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है कि ये फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस है क्या। So the फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस, so my dear friends, एक ऐसा डिवाइस है जहां पर आपको ना तो किसी केबल की जरूरत है ना ही किसी सिम की जरूरत है। एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लीजिए गाइस आपका फोन है, राइट, आपका जो हैंडसेट है, आपका स्मार्टफोन है, उसके अंदर सिम डलता है एंड उसके बेसिस पर यू आर बेसिकली एबल टू एक्सेस द इंटरनेट, राइट। दैट मींस डायरेक्टली वेव्स के थ्रू आपको इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है बिकॉज यू आर हैविंग सिम ऑन योर फोन। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, आप सभी देखते हैं कि हमारे घर पे एक वाईफाई लगता है, राइट, जिसके ऐसे एंटीनाज होते हैं। सो इसके साथ एक ऑप्टिकल फाइबर अटैच होती है। आई होप दैट सभी इसको रिलेट कर पा रहे हैं। तो इस फाइबर के जरिए हमारे पास इंटरनेट सर्विसेज आती हैं, ठीक है। बट यहां पर इन द फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस व्हाट एग्जैक्टली वी आर प्रोवाइडिंग इज, यहां पर इस फाइबर की भी जरूरत नहीं है, यहां पर इस सिम की भी जरूरत नहीं है। विदाउट सिम एंड फाइबर यू विल बी एबल टू एक्सेस द इंटरनेट एंड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड the internet in the homes and the offices, this fixed wireless access device has been created. तो यहां पर इंडिया का पहला 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस लॉन्च किया है BSNL ने, भारत संचार निगम लिमिटेड, जिन्होंने इंडिया का पहला 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस को लॉन्च किया है और इसको नाम दिया गया है क्वांटम 5G FWA, ठीक है। तो अंडरस्टैंड, आई होप आप सब कर पाए हैं व्हाट एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, ठीक है। तो काफी इजी वे में हमने इसको डिस्कस किया है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें तो ये पहला सिमलेस 100% होम ग्रोन 5G FWA सोल्यूशन है, डेवलप्ड एंटायरली बाय द इंडियन इंजीनियर्स। तो दैट मीन्स ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो फैसिलिटी है, इसको इंडियन इंजीनियर्स ने खुद बनाया है, इंडिजिनस है और इंडिया का पहला फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस है, ठीक है। इसको हैदराबाद में लॉन्च किया है। इट विल बी एक्सपेंडेड इन द अपकमिंग टाइम टू बेंगलुरु, पौंडीचेरी, विशाखापट्टनम, पुणे, ग्वालियर, चंडीगढ़ बाय सितंबर 2025। तो ये नीचे वाला पार्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिए कि हैदराबाद में इसको सबसे पहले लॉन्च किया है। इट हैज बीन सॉफ्ट लॉन्च्ड इन हैदराबाद। दैट्स इट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर, ओके। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। यहां से हमें क्या याद रखना है, BSNL का नाम याद होना चाहिए। क्या नाम रखा है इस FWA सर्विस का, क्वांटम 5G FWA। सो ये दो डिटेल्स काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इवन FWA फुल फॉर्म कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल रेन एक्सपेरिमेंट। तो दिल्ली को क्लियरेंस मिल गया है। दिल्ली हैज रिसीव्ड द क्लियरेंस फॉर इट्स फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल रेन पायलट प्रोजेक्ट which aims at pollution mitigation through cloud seeding। तो दोस्तों क्लाउड सीडिंग के जरिए हम पॉल्यूशन को मिटिगेट करेंगे। सो वी ऑल नो दैट ड्यूरिंग विंटर्स देयर इज अ लॉट ऑफ एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर एबल टू मिटिगेट दैट पॉल्यूशन, वी आर एबल टू रिड्यूस दैट पॉल्यूशन। हाउ वी कैन डू दैट? with the help of rain. If rain is there, then that pollution will settle down on the earth. I hope this is clear. So यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि normally बारिश नहीं आ रही, so what exactly we are doing is we are trying to bring artificial rain. Artificial rain कैसे होती है दोस्तों? With the help of cloud seeding. What exactly the cloud seeding stands for? So what exactly we do is, for example, here it is a cloud, right? So what we will be doing, we will be spraying silver iodide. We will be spraying silver iodide.
or dry ice into the cloud, and a reaction will take place, and what will happen? This reaction will make these clouds rainfall. I hope this part is clear, my dear friends. So this is what we call the cloud seeding, and the project title Technology Demonstration Evaluation of Cloud Seeding as an Alternative for Delhi NCR Pollution Mitigation is the name of the project which will be executed along with IIT कानपुर. तो यहाँ पर तीन चीजें याद रखनी है. पहली चीज, कहां पर ये किया जाएगा? दिल्ली के अंदर किया जाएगा एक्सपेरिमेंट. किसके साथ किया जाएगा? IIT कानपुर के साथ किया जाएगा. कैसे किया जाएगा? आर्टिफिशियल रेन कैसे की जाएगी? क्लाउड सीडिंग की हेल्प से की जाएगी. दैट्स ऑल दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर. प्रोजेक्ट का नाम याद नहीं रखिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. आई होप दिस इज क्लियर. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल पर. विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2. So this is basically one of the book which is the compilation of the speeches which is being given by the President of India, Srimati Draupadi Murmu ji. So volume 2 has been recently launched, collection of 51 speeches which offers the window into the vision, philosophy and priorities of President of India during her second year in the office from August 23 to July 2024. That means August 23 से July 24 की जितनी speeches थी उनको कलेक्ट किया गया और एक बुक के अंदर उसको पब्लिश किया गया है. ओके, सो बस नाम इंपॉर्टेंट है, विंग्स टू आवर होप्स. दैट्स इट. दैट्स ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम हियर. बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल पर. इंडियाज फर्स्ट फुल स्केल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. So my dear friends, Indian Space Research Organization has transferred complete launch vehicle technology for the small satellite launch vehicle to a private sector player, Hindustan Aeronautics Limited. So under a 511 crore rupees deal, this technology transfer deal has been done between ISRO and the Hindustan Aeronautics Limited. और इसके अंदर जो complete technology है हमारी ISRO के पास for the manufacturing of small satellite launch vehicles, तो उस technology को हम transfer कर रहे हैं officially to the Hindustan Aeronautics Limited. Right? So this was signed among ISRO, HAL, InSpace, New Space India Limited, and this will be enabling HAL that it will be able to independently build, own and commercialize SSLV launches. तो हमारे जो small satellite launch vehicles हैं दोस्तों, उनको ये खुद से अब बिल्ड कर पाएगा, डिजाइन कर पाएगा, ओन कर पाएगा और कमर्शियलाइज कर पाएगा. With the help of this, you must have seen so many times that India is basically launching. India is placing the satellites of other countries also into the orbits. So now we can commercialize this particular operation. Okay, and how we will be doing that? By providing this technology transfer to the private player. So here the transfer includes extensive ISRO training at both ISRO and HAL facilities. So HAL के अंदर जो लोग हैं उनका यहाँ पर ग्रूमिंग करना बहुत जरूरी है, उनका स्किल ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है, so that they can execute all these operations successfully. So the movement aligns with India's ambition to grow its space economy to $44 billion. तो $44 billion by 2033 ये हमारा एक टारगेट है जहां पर हम इंडिया की स्पेस इकोनॉमी को इतना एक्सपेंड करना चाहते हैं. दिस स्टेप इज रियली गोइंग टू बेसिकली हेल्प इंडिया इन अचीविंग दिस पर्टिकुलर ड्रीम. तो याद रखिए, इसरो एंड HAL जिनके बीच में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ इन द SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स. स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स की बात करें, दीज आर दो सैटेलाइट्स having weight up to 500 kg और इनको लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है अंडर दिस पर्टिकुलर पार्ट. आई होप दिस इज क्लियर गाइस. बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल पे. दैट इज ओमन टू लेवाई पर्सनल इनकम टैक्स. तो ओमन पहला गल्फ कंट्री बना है एंड इट हैज बेसिकली बिकम फर्स्ट सच गल्फ कंट्री टू अनाउंस अ पर्सनल इनकम टैक्स. This will be implemented from 2028 by 5% rate on individuals earning $109,000 annually. So जो लोग $109,000 annually वहां पर अर्न कर रहे हैं उनके इस पर्टिकुलर इनकम पर 5% का टैक्स लगने वाला है. एंड ओमन हैज बिकम फर्स्ट सच गल्फ नेशन टू बेसिकली इंप्लीमेंट दिस पर्सनल टैक्स. पर्सनल टैक्स क्या होता है दोस्तों? जो गवर्नमेंट आपकी पर्सनल इनकम पर लगाती है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल इनकम टैक्स. I hope this is clear. Moving to the next news article, World Para Athletics Championships. Why exactly we are doing this? Why we are discussing this? Because the 12th edition of this championship will be hosted by India. So India इसको host करने वाला है for the very first time, और with this India will become the 4th Asian nation to host the World Para Athletic Championship. इससे पहले कतर, UAE और जापान के अंदर हम ऑलरेडी इसे होस्ट कर चुके हैं एंड नाउ इंडिया विल बी बिकमिंग द 4th एशियन नेशन टू होस्ट दिस पर्टिकुलर पार्ट.
तो ये यहाँ पर अगर हम मैस्कॉट की बात करें तो विराज इज द ऑफिशियल मैस्कॉट फॉर दिस पर्टिकुलर चैंपियनशिप, पोर्ट्रेइंग एज अ यंग एलिफेंट विद द ब्लेड प्रोस्थेसिस। तो याद रखिए जो हमारा विराज है, विराज इज द मैस्कॉट, और ब्रांड एम्बेसडर कौन है इस पर्टिकुलर इवेंट की? द एम्बेसडर इज कंगना रनौत। कंगना रनौत जी को यहाँ पर अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो कौन होस्ट करेगा? इंडिया होस्ट करेगा। कहां होस्ट करेगा? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली के अंदर। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ही कॉमनवेल्थ को हमने होस्ट किया था, और यहीं पर हम वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप को भी होस्ट करेंगे इन ईयर 2025। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज अबाउट द डायमंड लीग। सो आफ्टर 2 years नीरज चोपड़ा हैज वन द डायमंड लीग। Finally has won the diamond league with a javelin throw of 88.16 meters held recently in Lausanne, right? So in the Paris 2025 event, Julian Weber of Germany and Luis Mauricio came second and third respectively. So on the top it was Neeraj Chopra who has won this diamond league, followed by Julian Weber and Luis Mauricio. So that's all we need to remember from this part from the exam point of view. Next news article, Jasprit Bumrah. So my dear friends, you all know that the final day of the first test between India and England is taking place right now, and during this test match only, Jasprit Bumrah, Indian fast bowler, has created a record, and that record is basically of claiming 150 test wickets in the SENA countries. What are these SENA countries? This includes साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो सेना कंट्रीज के अंदर किसी भी एशियन द्वारा 150 विकेट्स यहां पर नहीं लिए गए थे। इससे पहले ये रिकॉर्ड वसीम अकरम का था जिन्होंने 146 विकेट्स लिए थे, एंड नाउ ही हैज बीन सरपास्ड बाय जसप्रीत बुमराह। तो यहां पर ज्यादा मेजर क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है दैट हु हैज बिकम द बॉलर बेसिकली टू क्लेम दिस 150 विकेट्स? द राइट आंसर विल बी जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप। So my dear friends, when it comes to the esports world cup, what is esports world cup? तो आप सभी ने बचपन में वीडियो गेम्स खेले होंगे, राइट? सो लेट मी टेल यू, व्हाट इफ देयर इज अ सर्टेन इवेंट। मान लीजिए कि फुटबॉल ही आपका एक गेम है, फुटबॉल का आपका वीडियो गेम है, और आप यहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो फॉर दैट फुटबॉल गेम, राइट? और वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज आ रहे हैं टू प्ले दैट पर्टिकुलर गेम। तो यहां पर ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में बेसिकली आपके वीडियो गेम्स का ये वर्ल्ड कप है जहां पर डिफरेंट प्लेयर्स आर रिप्रेजेंटिंग देयर कंट्रीज। एंड ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जो रिसेंटली होने वाला है उसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं पोर्टुगल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आई होप दिस इज क्लियर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज अ पोर्टुगीज फुटबॉलर अपॉइंटेड एज ऑफिशियल ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ सेकेंड एडिशन ऑफ ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप। कहां पर होगा ये गेमिंग टूर्नामेंट? इट विल बी टेकिंग प्लेस इन सऊदी अरेबिया। दैट्स इट। Next news article is on the International Olympic Day. So guys, every year on 23rd of June we celebrate International Olympic Day, and this year the theme of the day is Let's Move. Let's Move is a theme for the International Olympic Day 2025. So हर साल हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं बेसिकली टू कमेमोरेट द रिवाइवल ऑफ ओलंपिक गेम्स इन पेरिस ऑन जून 23, 1894, और यही डेट है जब इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी को सेटअप किया गया था। और दोस्तों रिसेंटली हमने कवर किया था कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के प्रेसिडेंट रिसेंटली बने हैं द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ever of International Olympic Committee, and what is the name of this person? That is Kirsty Coventry. And let me tell you that during this particular event, Kirsty Coventry has also assumed the charge as the president of International Olympic Committee, and she has succeeded Thomas Bach. तो थॉमस बैक को इन्होंने सक्सीड किया है। और इसके साथ साथ गाइज अगर हम बात करें इस साल की जो थीम है दैट इज लेट्स मूव। तो लेट्स मूव कैंपेन को लॉन्च किया था 2023 के अंदर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। और इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया के अंदर लेट्स मूव +1, लेट्स मूव इंडिया +1 कैंपेन लॉन्च किया गया अलॉन्ग विद द अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन एंड रिलायंस फाउंडेशन। तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर इंडिया के अंदर लेट्स मूव इंडिया +1 कैंपेन को लॉन्च किया गया था। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी की पहली फीमेल प्रेसिडेंट कर्स्टी कोवेंट्री जिन्होंने चार्ज अज्यूम किया है। और थीम क्या है इस डे की? तीनों चीजें हमें कवर करनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज अबाउट द वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 2025 दैट वी सेलिब्रेट एवरी ईयर दिस डे ऑन जून 20। तो जून 20 को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। दिस ईयर द थीम इज सॉलिडारिटी विद रेफ्यूजीज। So guys, you can see here who the refugees are. These are those people who are being forced to leave their country.
due to the war, due to the violence, due to the disaster, and it is very unsafe for them to come back to their nation again. So that is basically are the refugees, and every year on 20th June we celebrate World Refugee Day. फॉर एग्जाम्पल आप सभी ने देखा कि इजराइल में काफी डिस्ट्रक्शन हुआ एज ईरान इज अटैक्ड इजराइल, राइट? सो इजराइल के जो लोग हैं, मान लीजिए वो लोग अगर अब अपना कंट्री छोड़कर किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, देन दीज पीपल आर कॉल्ड रिफ्यूजीज। आई होप आप इस चीज को समझ पाए हैं विद द लेटेस्ट कॉन्टेक्स्ट। बढ़ते हैं अगले न्यूज आर्टिकल पर, दैट इज यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे 2025। तो यू ऑल नो गाइस दैट हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी कम्युनिटीज के अंदर पब्लिक सर्विस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो उसी को एम्पावर करने के लिए, प्रमोट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ऑल्सो सेलिब्रेट्स यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे एवरी ईयर ऑन जून 23, और इस साल की थीम है 5 years to 2030 एक्सेलरेटिंग पब्लिक सर्विस डिलीवरी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो याद रखिए 2030 को क्यों हमने चूज किया, क्योंकि बाय 2030 वी वांट टू यहां अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, right? We all know the sustainable development goals, the 17 sustainable development goals that we want to achieve by 2030, and this year we are basically here focusing on 5 years to 2030 accelerating public service delivery for sustainable future. I hope this is clear। और इसी के रिगार्डिंग में यहां पर एक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था एट समरकंद, उज्बेकिस्तान। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। So that's all from the today's session. So with this we have covered all the important news articles from the today's session, but let me tell you guys that this is not the end of the today's session, because the most important part now starts, because in the examination we are required to solve the MCQs, and for solving the MCQ successfully it is very important for us to practice them and also to ensure that we are able to retain all the important part that we need to remember from these news articles। और ये कैसे होगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे न्यूज आर्टिकल्स की, जब हम प्रैक्टिस करेंगे सॉल्विंग दीज MCQs, और इसीलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए हम लेकर आए कुछ MCQs। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऑन द 12th edition ऑफ वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, एंड देयर आर 3 blanks here, and you need to identify here that which option will be appropriately filling these 3 blanks। So the first option is that this will be hosted by फॉर द फर्स्ट टाइम बाय विच कंट्री, ऑफिशियल मैस्कॉट यहां पर क्या है, और ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। यहां पर 3 कीवर्ड्स है जिन पर हमें फोकस करना है। इट विल बी होस्टेड बाय इंडिया, व्हाट इज द मैस्कॉट, दैट इज विराज, एंड हु इज द ब्रांड एम्बेसडर, दैट इज कंगना रनौत। सो व्हाट इज द राइट आंसर हियर? So the right answer here is option A, absolutely right. India, Viraj, Kangana Ranaut is the right answer. Absolutely right. So I can see Anushka, Harshal, Gangadhar, Gururaj, everybody has given the right answer. Well done guys. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल पर। सो फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल रेन पायलट प्रोजेक्ट कहां पर लॉन्च किया जाएगा? द सेकेंड पार्ट इज दैट इट विल बी एग्जीक्यूटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन। आई टोल्ड यू कि इस न्यूज आर्टिकल से 3 चीजें हमें पढ़नी है। एक चीज ऑलरेडी गिवन है, क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल रेन को हम लेकर आएंगे। कहां लेकर आएंगे, किसके साथ लेकर आएंगे? सो इट विल बी attempted in Delhi and executed along with IIT Kanpur. So right answer is option C, that is Delhi and IIT Kanpur. Next question. So Dash became the 3rd Indian state to achieve full functional literacy. तो full functional literacy को अचीव करने वाली 3rd इंडियन स्टेट का क्या नाम है? एंड यू नीड टू ऑल्सो टेल मी हियर व्हाट इज दैट बेंचमार्क दैट द स्टेट हैज क्रॉस इन ऑर्डर टू, और एनी स्टेट बीट एनी स्टेट हु वांट टू बिकम फुल्ली लिटरेट, तो उसको क्या बेंचमार्क क्रॉस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बिकम द फुल्ली लिटरेट स्टेट? सो ये दोनों चीजें आपको बतानी है। द नेम ऑफ द स्टेट इज त्रिपुरा। नाउ व्हाट इज द बेंचमार्क हियर? इट इज 90% और 95%? इट इज ऑफ 95%. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Absolutely right. So many people have given the right answer in the chat box. I'm really glad to see. Now guys, moving to the next question. So training of trainer program को recently launch किया गया था। आपको identify करना है what is the name of that particular ministry, और वो कौन सी organization है जो कि modules बनाएगी for training the trainers under the TOT program। ठीक है, सो आपको identify करना है the name of that particular ministry and what is the name of the organization। मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, क्योंकि ग्राम पंचायत को हम एम्पावर करने वाले हैं टू बिकम फाइनेंशियली सस्टेनेबल, राइट? फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हम उनको देना चाहते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट इंस्टीट्यूट? दैट इज IIM अहमदाबाद, विच इज गोइंग टू एम्पावर देम। सो ऑप्शन बी इज अगेन द राइट आंसर। नाउ गाइस, इट्स द टाइम ऑफ द होमवर्क क्वेश्चन, एंड द होमवर्क क्वेश्चन इज बेसिकली
ऑन द नव्या प्रोग्राम। तो नव्या प्रोग्राम के ऊपर एक होमवर्क क्वेश्चन है आप सभी के लिए, और जब भी ऐसे क्वेश्चन को आप देखते हैं दोस्तों, हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज, फर्स्ट स्टेप इज जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई द सेंट्रल टॉपिक। सेकंड स्टेप, just see what is the demand of the question. Third step is identifying the keywords. तो हमने पिछले सेशंस में आपको बार बार बताया है, ये इस सेशन में आपको खुद से इंप्लीमेंट करना है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू टेल मी द राइट आंसर इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। अगर हम बात करते हैं होमवर्क क्वेश्चन पिछले सेशन का, तो द क्वेश्चन वाज बेसिकली on the energy transition index 2025 rankings, and the right answer to this question is option B, that is only 2 and 3, and the people who have given me the right answer are the star performers of the previous session. तो कौन कौन star performers है, you can see I am having a long list here. I cannot dictate the name of all the people, but I am really glad to see that yes, you are able to answer the question successfully, and that should have boosted your confidence level also from the exam point of view. So दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर एग्जाम का दौर शुरू हो चुका है, आपका PFRDA का नोटिफिकेशन आ चुका है। द पीपल हु आर वेटिंग फॉर PFRDA, हु वांट टू जॉइन PFRDA, उनके लिए काफी अच्छी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ साथ द पीपल हु आर बेसिकली एमिंग फॉर एंटरिंग द बैंकिंग सेक्टर, तो उनके लिए SBI PO is really a very important opportunity, and now SBI PO form has been out here, right? So आपके लिए काफी अपॉर्चुनिटीज आ चुकी हैं। सो इंश्योर कीजिए कि इन अपॉर्चुनिटीज का पूरा बखूबी फायदा उठाया जाए, और यहाँ करंट अफेयर्स इज रियली गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑल्सो। तो यहाँ पर क्यों ना अपनी करंट अफेयर्स प्रिपरेशन को अच्छे से किया जाए, सो दैट यस वी आर गोइंग टू एक्सेल इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम। सो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया दोस्तों, तो डेफिनेटली, एंड इफ यू आर न्यू टू योर यूट्यूब चैनल, you can subscribe to it, and you can press on the bell icon to receive all the latest updates of the courses and videos. Apart from that, if you're planning to come to my next session of the CT 360, please ensure that you are revising the session, and how you will revise by watching the session again, and you should also answer the homework question. Apart from that, further revision के लिए PDF is required, right? You will be getting the PDF of the session from Telegram channel, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, okay? So I hope guys that today's session was really useful and fruitful to all of you. अगर आपकी कोई भी query है, please feel free to ask in the comment section. I will be answering you there. And one of the student asked me the query in the previous session कि कौन सी days को ये session हम conduct करते हैं. So every Tuesday, every Thursday and every Saturday at 5 PM we conduct the CT 360 series session where we cover important GA and ESI current affairs. ठीक है, और अगर इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है गाइस, डेफिनेटली आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, एंड यू कैन आल्सो कॉल अस एट दिस गिवन नंबर। ठीक है, सो नाउ आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन, बट बिफोर दैट शुभम इज हैविंग द क्वेश्चन कि सर नाबार्ड ग्रेड ए कब आएगा। सो होपफुली जल्दी खुशखबरी सुनाएंगे नाबार्ड ग्रेड ए के भी। ठीक है, टिल देन आई जस्ट वांट ऑल ऑफ यू दैट रेगुलरली आप सेशंस को फॉलो कीजिए, सो दैट आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन इन सिंक रहे, एंड ड्यूरिंग द लास्ट मोमेंट आपके पास कोई बहुत बड़ा पाइल्ड अप करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस ना हो पढ़ने के लिए। सो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर फॉलोइंग दिस सेशंस रेगुलरली। So Gangadhar is saying, "Sir, session was awesome. Thank you, Gangadhar, for your kind words." So where can I get the PDF? So Gangadhar, I have already told you that in the description of this session you will find a link, Telegram channel का link मिलेगा आपको. Just click on that Telegram channel link, and from there you will be able to join the Telegram channel. Telegram channel पर आपको हमारे चैनल पर जितने भी हम YouTube सेशंस लेते हैं उस सभी का PDF आपको वहां पर प्रोवाइड किया जाता है. I hope this is clear, Gangadhar. So Anushka is saying, please dictate our names, it increases our motivation. Okay, so from the next session we will try about that, Anushka. Okay, and I am really glad to see that काफी students को हमारा वो mnemonics और tricks पसंद आया था, and they've even started having their own mnemonics and tricks. I can see in the chat box, in the comment section also of the previous session. That's really good to see, guys. और अभी कुछ दो सेशन से ऐसा कोई करंट अफेयर नहीं आया जहां पर हम इन ट्रिक्स को यूज कर सकते हैं, but definitely in the upcoming sessions wherever we can see that yes, there is some complex topic which we can really retain easily with the help of a mnemonic or trick. I will be bringing that for you also, right? Do not worry about it. सो मेटामॉर्फोसिस का क्वेरी है दैट कितने महीने का सीए कवर करना चाहिए. सो बेसिकली व्हेन इट कम्स टू योर एग्जामिनेशन, अगर आप रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, लाइक आरबीआई, नाबार्ड,
ठीक है, तो इसके केस में फॉर द फेज 1 last 5 months of the current affairs are desirable to be covered, where last 3 months are the most important ones from the exam point of view, क्योंकि majority of the questions are being asked from the last 3 months in the examination, but still you are having the time and please ensure that in order to fetch some additional marks 4th और 5th month का current affair भी आप cover कीजिए. Okay, and for the phase 2 examination for the regulatory bodies exams, last 8 months of the current affairs is desirable to be covered, where last 6 months are the most important ones. तो phase 2 में लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लास्ट 8 मंथ्स का करंट अफेयर्स आपका डिजायरेबल है, राइट. नाउ व्हेन इट कम्स टू द बैंकिंग एग्जामिनेशन, लाइक अगर आप अभी एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन करेंगे दोस्तों, राइट, फॉर और अगर किसी और बॉडी की बात करते हैं लाइक पीएफआरडीए की, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर आप लास्ट 5 मंथ्स का करंट अफेयर्स आपके लिए डिजायरेबल है, वेयर लास्ट 3 मंथ्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. ठीक है, सो आई होप कि ये क्लैरिटी अब आपको है क्या टाइमलाइन हमें फॉलो करनी है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो आई होप दैट सभी की क्वेरीज यहां पर रिजॉल्व है. देयर इज नॉट अ सिंगल स्टूडेंट जिसकी कोई क्वेरी रह गई है, राइट. सो गाइस, अगर स्टिल आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपको बाद में समझ आता है, बाद में क्वेरी आती है माइंड के अंदर, डू नॉट वरी, फील फ्री टू आस्क योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी रिजॉल्विंग योर क्वेरी देयर ऑल्सो, एंड you can also email to us at hello@edutap.co.in, and if you want to connect with our team, you can definitely call us at 8146207241. So now I will be meeting you in the next session. Till then, stay happy, stay healthy. But yes, there is very important part, my dear friends, that tomorrow the people were waiting for the monthly revision session, right? So current affairs का आपका GA, ESI, finance current affairs कल हम discuss करेंगे. So make sure that you are coming to that particular session well prepared tomorrow at 6 p.m. Tomorrow at 6 p.m. my dear friends. I'm really sorry. So 6 p.m. पर हमारा सेशन रहेगा monthly revision session for your GA, ESI and finance for the month of April 2025. So make sure that you are coming in that session well prepared, attending that session, and this is going to be wake up call for all of you that what is your एग्जाम प्रिपरेशन लेवल्स और क्या हमें किस पर काम करना है, ये सब आपको पता चलेगा कल के 6 बजे के सेशन के अंदर. सो प्लीज एंश्योर दैट आप कल उस सेशन को जरूर अटेंड कीजिए. नाउ आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, विश यू ऑल हैप्पी लर्निंग.